सेशन, एक डिबेट में दे रहे हैं, पूरा शो का फतवा करके आप उस पर चला रहे हैं. तो सेंसेशनलिज्म इज अ वेरी थिन लाइन, and a news is important and the peg is important, the line is important, but if you are overly trying to sensationalize something, then आपको भी पता होगा, हर एक को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी खबर के साथ. तो वो आपको हमेशा ख्याल रखना होगा. और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से पत्रकारिता चल रही है इस देश में, उसमें थोड़ी आप लोग बेहतर स्टेज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एंटर किए थे तो सांप और बिच्छू की भी कहानी चलती थी, और बगल में आप खड़े हो और इतना बड़ा कुछ बैल और जानवर है, उस पर पूरा हाफ एन आवर आप एंकरिंग्स कर रहे हैं, और इतनी शर्मिंदगी होती थी कि लगता था ये करने क्यों आए हैं. Believe me, it's been a very tough battle for me. When I entered journalism and I was anchoring in different channels, then women were not even taken into hardcore political news. We were supposed to do the second half of the wheel, where you usually had a very soft story or an entertaining story. It's been such a struggle. I have fought with so many editors and I have said, I will lose my job, but I will not do that. I want to do hardcore news. I want to do hard news debates. And it's been a very, very tumultuous journey. I have entered into editors' rooms and had a very hot argument with them, because I thought that there is space for me and I'm not being given that space. So always stand with your conviction. If you know what you're doing, you're serious about your job, तो फिर आपके लिए वो रास्ता बढ़ेगा. पर अगर आप वो सेंसेशनलिज्म के आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, तो फिर आप कुछ और ही बन जाएंगे. तो हमेशा ये ख्याल रखिए, कीप योर फैक्ट्स on your fingertips. I don't expect you to know how many seats which party got in the UP elections, but I want you to know what are the chances that these parties have, what is the seat sharing numbers that the SP and the Congress has, what are the strong seats for the BJP, what are the, in Punjab, what is the Malwa region, what is the Doaba, Manjha. You should know all this so that you know the rough big picture of a state which is going to the elections. And the Economic Times के 2-3 जो political pages होते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ, you must read them. So even in newspapers, you will see that Times of India will give you a lot of news that you should know, because the consumers actually like that kind of news. That's also a very important experiment in news. Times of India has so many viewers because they believe that we cater to the consumers. They call them consumers of news. But Express will have different stories. But ET will give you a very in-depth political angle to every story. You must read the 2 political pages of ET if you're seriously into political journalism or understanding. अगर वो आपका business में और economics में बहुत interest नहीं भी है, तो वो पन्ने आप ना पढ़ें. उसका जो political theater जो pages होते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा पन्ना, अभी elections में वो बढ़ा देते हैं 2-3 pages. So when they tell you about Punjab, they're going to tell you everything. They're going to show you with maps, with seats, with numbers. तो बार-बार आपके अंदर reinforce होता है. तो अपने आप को इतना आप सशक्त बना लें कि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप ओछी और हल्की बात करें ही ना. आपको पता हो कि क्या विज्ञान है राजनीति का भी, और क्या उसके आंकड़े हैं, और क्या उसका इकोनॉमिक्स है. तो ये अगर आप यू आर आर्म्ड विद दिस इन अ वे, देन यू विल योरसेल्फ नो दैट सेंसेशनलिज्म विल नॉट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट. बट डू गो इनटू दिस प्रोफेशन विद ओपन आईज, नोइंग दैट अल्टीमेटली any organization is not going to pay for your salary from their pocket. So the economics of it is equally important. There are examples like BBC and others, और कैसे आप पब्लिक इशू के थ्रू पैसा लाते हैं, और पैसा कैसे एक चैनल कैसे चलता है, तो वो उसकी अपनी इकोनॉमिक्स है. बट गो इनटू दिस प्रोफेशन विद ओपन आइज कि आपको जिस तरह की भी खबर करने को कहा जाए, आप उसमें क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और मीडिया ट्रायल का भी उन्होंने जिक्र किया था. मीडिया ट्रायल दरअसल एक है समस्या जो कि उस पत्रकार के विवेक पर निर्भर है, और टोटली जिसको कहते हैं उस पर डिपेंडेंट है, जो उस वक्त उस न्यूज़ को हैंडल कर रहा है. क्योंकि एडिटर आपको बियॉन्ड द पॉइंट कुछ बताता तो है नहीं. आपको पता है कि ये टॉपिक है. अब मैं चाहूँ तो किसी का भी मीडिया ट्रायल रोज बैठ के कर सकती हूँ. Are we done? Is the time over? No. Okay. So whenever the time is over, do let me know. No. So एंकर हूँ, ज़्यादा बोलने की आदत है. So मीडिया ट्रायल, या फैक्ट्स पे अगर हम न्यूज़ को रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल नहीं होगा. बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम द आस्किंग द राइट एंड वेरी वेरी ग्रिलिंग क्वेश्चंस. आप कोई भी टॉपिक लो ना, आप हर पार्टी के लिए 2-2 सवाल रोज लिखो. जो भी डिबेट है जो आप देख रहे हो टीवी पे, 2 सवाल लिखो बैठ के. आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में. एंड दैट विल ऑल्सो शार्पन योर क्वेश्चनिंग स्किल्स एज अ जर्नलिस्ट. So then in every news you will handle it seriously, you will ask the right questions, you will know how to frame your questions.
तब कहीं ना कहीं, और इसकी बात करें तो, और ऐसा देखने में लग रहा है, ऐसी चीजों से आप बिल्कुल ही बच जाएंगे। तो ये आदत डालिए। I think on media trial, I don't want to go beyond that point. I think each one, it depends on how you educate yourself on knowing that you should not go beyond a point or a limit. That actually depends on the anchor. Okay, now news bulletins. Bulletins में आजकल जो anchor links होते हैं, जो आप स्टूडियो से शोज देखते हैं, उसमें ज्यादातर anchor links लिखे होते हैं. बट कुछ एंकर्स होते हैं जो अपनी एंकरिंग्स को भी चेंज करके खुद से लिखते हैं. वो आपको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अब वो प्रोड्यूसर उसको लिख देगा, जैसे